ओम श्री साई राम। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हृदाकाशे सदा भान्तं शान्तं आनन्दरूपिणं ज्ञानभानुम् अहं वन्दे सद्गुरुं सत्यसायिनम्। स्वामी के श्री चरणों में प्रतिक्षण कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं उनको मेरा सादर प्रणाम और साई राम। जब किरण आंटी से मुलाकात हुई थी परती में नए साल के दरमियान, तो हम दोनों के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्टेड समवन कमिंग डाउन एट दिस जंक्चर, स्पेशली इस कोविड टाइम पे, बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस हैं। एंड आई थिंक देयर वाज अ कनेक्ट बिटवीन आंटी एंड मी, एंड समहाउ इससे पहले भी मेरे को 2-3 लोग बोल चुके हैं, इवन अर्चना दीदी, यू हैड सेड मी प्रोफेशनल टाइम्स कि साई तू कब बोलेगा। समहाउ आई वाज एबल टू डॉज यू, बट आंटी के साथ पता नहीं मैं डॉज नहीं कर पाया। सो द कमिंग टू द माय एक्सपीरियंस विद स्वामी, as I just written, I'm Swami's child, and I don't think there is any doubt in anyone's mind for every one of us across the globe. Let me start the very first thing. My grandparents from both the side, mother ki side or father ki side, Swami was a sacred saint, like any guru. Like it could be the Shankaracharyas of the Adi Shankara Peeths, or the Sri Ravi Shankar ji, or you name it, you have it. Swami he was not Swami, but a saint, holy saint. So 74, my parents got married, and June 75, if I'm not wrong, Swami was visiting Delhi, and he was giving darshans in golf links roads, if I'm not wrong. And I think my mother was in the family way. I was about to born. I was not there. स्वामी के दर्शन शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे, क्योंकि दिल्ली में थे तो ज्यादा मुलाकात स्वामी से दर्शन नहीं होते थे। तो जैसे ही स्वामी दर्शन लाइन में लोग बैठे थ्रू सम नोन पर्सन, व्हाट मदर टोल्ड मी कि स्वामी दर्शन के लिए सीधा स्वामी मम्मी के आगे खड़े हो गए। एंड शी बीइंग न्यू टू द होल सिनेरियो, वो घबरा मतलब तुम समझ नहीं है कि करे तो करे क्या। तो आसपास जो थे कहते स्वामी के पाद नमस्कार लो, हैव हिज ब्लेसिंग्स एंड टेक दैट। मम्मी ने पैर छुए एंड शी लुक्ड एट हिम एंड स्वामी वाज स्माइलिंग। देन स्वामी माँ ने फिर 2-3 बार और लिया, मम्मी को समझ नहीं आया, स्वामी वाज जस्ट स्माइलिंग एंड वेविंग हिज एक्शंस एज यूजुअल। देन शी केप्ट हर, अपना सर स्वामी की श्री चरणों में रखा, एंड देन स्वामी लेफ्ट। दैट्स व्हाट माँ ने मेरे को बताया था। And then within I think September, the fruit is in front of you. So but my darshan, Swami's darshan, was somewhere in 94 when we went for Shanti Seva for the first time. Before that, Swami के भजन activities early 90s से ही start किया था, not before that. तो 94 में चांस मिला, went to had यहाँ पे सेवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा किया। देन स्वामी, बिकॉज कुलंथॉल वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, स्वामी व्हाइटफील्ड में थे तब। तो हम सेवा करके हम लोग ओवरनाइट बस पकड़ के वेंट टू व्हाइटफील्ड। साई रमेश हॉल के बाहर हम लोग बैठे हुए, सेवा दल के साथ बैठे हुए थे। स्वामी केम हिज दर्शंस। तो व्हेन आई saw Swami for the first time,
बस यही स्वामी है। मैंने कहा ये क्या है, मतलब you need Swami means something bigger than you or something larger than life or something in fashion. I saw Swami coming away and just passing away and smiling and giving. Like, what was this here? This is not Swami which I expected. Chalo, then Swami ne kaha, go for breakfast and then come. Then we sat for darshan lines inside the Swami Ramesh hall. I still remember exactly as soon as Swami came out of his room from the stage. Amongst us, the Sevadals of Delhi who was sitting in the Swami Ramesh hall, someone started, I think who, I don't know, and in unison the whole Delhi team was chanting, "Tumi ho mata pita, tumi ho bandhu sakha, tumi ho mata." And the whole Sai Ramesh hall was singing this. And Swami, he said, "Dhire dhire, man mein." Then he came and started giving his Padma Namaskar his usual way. And जैसे ही स्वामी मेरे सामने आए, मुझे नहीं मालूम मैं क्या हुआ. I was crying like a child. For next 15 minutes, I don't know what Swami did with me. I don't remember. I was just crying like anything, like a child crying. And even if someone was, a small boy was sitting next to me, he said, "भैया आप रो क्यों रहे हो?" And I was smiling and crying at the same time. मैं उसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था. And then Swami blessed me, and I think that was a change in my life. Like Didi just introduced me like Vedam, and I started with the Vedam also. It's a holy prayer that we are not praying for just the two Dvipade, that is two legs, people with two legs, persons with two legs. We say we are praying for the pet with four legs. That's animals also, animal kingdom also, not only human kingdom. Sorry. तो हम सभी के वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, for the whole universe, all the universe. So again, during one of the services, I think it was 99th service, August, Swami's residence में ड्यूटी दे रहा था मैं. तो लास्ट डे था. नेक्स्ट डे वी आर टू टेक द पाद नमस्कारम. तो वहाँ पे जो रेगुलर स्टाफ होते तो उनसे, क्योंकि साईराम हो जाती थी, तो वो पूछते रहते थे. तो मैंने कहा, साईराम आंटी, दिस इज माय लास्ट ड्यूटी, टुमारो वी वर लीविंग बैक टू दिल्ली. She went inside after doing some, she was going back, she just turned back to me and said, "Come for birthday." Come for birthday. Okay साईराम, करे. अब मैं बाद में सोच रहा हूँ कि दिल्ली से आने में 15 दिन के सर्विस में 20-22 दिन की छुट्टी वैसे ही हो जाती है, और फिर उसके बाद नवंबर में आना बर्थडे टाइम से, मतलब जन समुद्र होता है यहाँ पे, कौन आएगा, कैसे होगा. और ये आंटी वजह से क्या गई है, कम फॉर बर्थडे, और मैं भी बिफ को हाँ कर दिया है. मैं कहा चलो देखेंगे जो होगा, एंड मैं भूल गया. एंड after some time it was said that second youth conference is coming up during Swami's birthday, and then then I also came back, joined it as Swami has called me already. 23rd को जब हम लोग कुलंथ हॉल में बैठे हुए थे, स्वामी व्हाइट ड्रेस में सिंहासन में बैठे, वहीं पे एक थॉट आया कि स्वामी, पेरेंट्स इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएंगे, दे कम फॉर सेवा बिकॉज ऑफ द एज एंड एवरीथिंग फैक्टर्स. एक बार स्वामी व्हाइट ड्रेस स्वामी को उनका दर्शन कराना चाहता हूँ. कुलंथ हॉल में बैठ के मन में सोचा, एंड दैट्स इट. एंड स्वामी blessed me with this wish very next year, 75th birthday. Somehow we got to know that Sri Satyasai Vratakalpam is to be performed on 17th November 2000. That Satyasai Vratakalpam, just like Satyanarayan Katha, जैसे Satyasai Vratam है स्वामी का, similar fashion में, that was to be performed in Kulanth Hall. And somehow parents को पता लगा, and they booked their tickets and other things, and they got confirmed, and they were able to perform that puja
on 17 November in Kolonthal in Bhagwan's divine presence. अब मैं क्या करूं? इनको तो टिकट मिल गया, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ठीक है, पेरेंट्स हैं वो अलग हो गए। अब मैं अकेला क्या करूं? मेरे को या तो टिकट लेना पड़ेगा या पीछे बैठना पड़ेगा। तो इतने में पता लगा कि शास्त्री जी, एमवी शास्त्री जी वाज आल्सो देयर। ही इज द मेन प्रीस्ट डूइंग द परफॉर्मिंग द पूजा। तो कहता है साई तू तो वेदम कर ले। मैंने कहा ठीक है वेदम कर लूंगा, लेकिन करूंगा कैसे, मुझे पता ही नहीं कुछ करना क्या है। कहता ठीक है तो मैं बात करता हूँ। तो ही स्पोक टू द सीनियर पर्सन्स एंड अदर। ही सेड, तो वन डे ही सेड साई वेदम इज देयर। मैंने कहा ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर सेड साई वेदम इज नॉट देयर। ठीक है। तो ये रोज अप्स एंड डाउन हो रहा था। तो लास्ट ऑन 16th इवनिंग ही सेज साई रात को 8 बजे कमरे में आ जाना। ही वाज लिविंग इन S7 में रह रहे थे। देयर इज अ प्रैक्टिस एंड टुमारो वेदम इज देयर एंड यू हैव टू वेट। मैंने कहा ठीक है। जैसे कैसे डिनर करके उनके घर पहुंचे, वहां पे स्टूडेंट्स थे स्वामी के, वो चैंटिंग, वो करीब 5-6 लोग वो थे। तो क्या करना है, उन्होंने कहा कि रुद्रम फर्स्ट पैरा चैंट करना है और मंत्र पुष्पम है एंड शायद दुर्गा सुक्तम है। दिस वाज अ प्लान। अब रुद्रम, अब उस टाइम रुद्रम का नाम सुनते ही हाथ पांव फूलते थे। खैर अभी फूलते हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं फूलते हैं, लेकिन उस टाइम से बिल्कुल, बिकॉज रुद्रम एक, फॉर इफ यू आर अ स्टूडेंट वेदम एज अ स्टूडेंट आई विल से रुद्रम इज अ PhD लेवल क्वालिफिकेशन। और हम अभी प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं, मंत्र पुष्पम आ गया, इधर उधर गायत्री आ गया, छोटे मोटे करके हम बैठे हुए हैं। चलो खैर रुद्रम किया, वेल आता था, ऐसा नहीं आता था, बट वो था कि वो एक डर था कि कहीं गलत ना हो जाए, बिकॉज रुद्रम कहीं भी चैंटिंग करना गलत, और वो भी भगवान के आगे, तो यू कैन थिंक ऑफ इट, इट्स गोइंग टू बी सीधा गॉन केस। somehow we practiced it out. It came to good. They said next day morning at 6:45 you come to Milky Way, the old ice cream parlor, if you remember, just opposite Swami's residence. वहां पे आ जाना, हम धोती लेके आएंगे, वो धोती पहन के फिर हम अंदर जाएंगे। ठीक है। मैं और मेरे साथी एक और थे दिल्ली से, वो भी पहुंचे, हम थे। 6:30 we reached there. 6:30, 6:40, 6:45, 6:50 हो गया, वो लोग नहीं आए। अंदर से शास्त्री जी का मैसेज आना शुरू हो गया, साई जल्दी आओ, इट गेटिंग लेट। 6:55 दे केम, जैसे तैसे धोती बांधा, वेंट टू VIP गेट फॉर द जेंट साइड। शास्त्री जी वाज स्टैंडिंग एट द मार्बल एरिया, तो जहां पे पहले गणेशा होता था। ही जस्ट कॉल्स अप, कम फास्ट। तो सीधा भागते हुए हम लोग वहां पहुंचे। कहते यहां नहीं, गो टू स्वामी's residence. Swami was staying in Punchandra at that time. We were rushed straight away within a fraction of minutes. We rushed to Punchandra. वहां साइड में जहां वो पास स्लाइड करते हैं, जहां पे शौरी आंटी एंड अदर टीम लोग बैठते हैं, हमें वहां खड़ा कर दिया गया था। There were other 9 couples who were standing in the procession and there were other things. तो as usual स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मैं और मेरे साथी जो थे, हम पीछे जाना चाह रहे थे क्योंकि भैया स्टूडेंट्स हैं एंड एक अच्छा लगता, तो वी वर गोइंग। कहते नहीं, आप दोनों ही आगे रहेंगे, नहीं तो स्वामी हमें डांटेंगे। स्टूडेंट्स कह रहे हैं, सिंस यू आर द गेस्ट सो यू हैव टू लीड अस। मैंने कहा ये मुसीबत, और एक तो वैसे रुद्रम में हाथ बहुत स्ट्रांग है हम लोग का उस टाइम में, और सबसे आगे भी खड़ा होना है। कहा चलो कोई बात नहीं। देन स्वामी केम, हमें इशारा हुआ। आई वॉज लीडिंग द प्रोसेशन फ्रॉम द फ्रंट, स्टार्ट से। वी टुक अ टर्न, एंटर्ड द लेडीज गेट। उसके बाद अगले 3 सेकंड्स मुझे नहीं समझ में आया मैं कहाँ हूं, क्योंकि जब आंख खोली मैंने, तो मेरे को केवल आंखें ही नजर आ रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था लाखों करोड़ों लोग उस कुलंत हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम उसकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन उस टाइम इतने लाखों लोग नजर आ रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड I was leading the whole procession out. And Swami is in the back. मालूम भी नहीं हमें कहाँ स्वामी। पीछे भी नहीं मुड़ सकते कि सबसे आगे खड़े, पीछे होते तो भैया कोई मुड़ भी ले। अब सबसे आगे है, चलो भाई चलते रहे। We crossed the ladies area and as usual Swami's road going straight towards the 8 turning, and स्वामी का जो ऐश्वर्य उठा
उसी रूट में गए. And Swami was typical master. He turned in the ladies side. शुरू में जो टर्न करते हैं वहां टर्न करके हम आगे जा रहे हैं. Then people shouted, "Hey, wait, 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 wait! Swami is there." And Swami is laughing from. हम पीछे मुड़ के देखें, Swami is laughing. ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे डिलीट कर रहे हो? मैं तो इधर जा रहा हूँ. Then we turned straight from the weight marble straight to the dais and we waited. Swami, as usual, went along his old devotees and devotees पूरा करके अपना घूम फिर के आराम से आके सिंहासन में बैठे हैं. And Swami सिंहासन में बैठे हैं and I am out what 6 to 7 feet from him, and I was little like this, Swami, and Swami in his sofa, I could remember he was placing his chin here and like this, he was doing this. क्या कर रहा है? मतलब as if he's asking me, तू यहाँ क्या कर रहा है? Then I just folded hands and just chanting whatever I was chanting. I think it was mantra pushpam. I don't remember it correctly. That was some experiences which I think I can't forget ever. And then Swami blessed us with this. पूरा प्रोग्राम स्वामी हमारे को ही देखते रहे, उधर घूमते वापस हम ही वेदम पे देखते रहते थे. Then that's what Swami blessed with Vedam with me at that juncture. And then started my real Vedam journey with Swami, participating as much as possible in Vedam activities and other activities also. Not that Vedam, but all service activities, bhajans, जितना हो सकता था कोशिश करता था. Then Swami 2010 में आए. Swami gave him a chance to welcome Swami. कुंड कुंभम दिया था मैंने. And then this is what happened with all this parents merging with Swami and he looking after me like a mother and a father till date. And that's a smooth, I can call a smooth in one way, but practically in worldly life, it will not be a smooth way. So sorry, I'm getting a little emotional about it. Coming to the other aspect of Vedam, Swami came to Delhi, then he went to Shimla and came back. We were again standing and giving him welcoming with the traditional way, Vedam chanting and other things. Swami को welcome किया, आगे बढ़ते गए. We were chanting mantra pushpam and we did a blunder. The stanzas goes like this. Asau vai tapannapam ayatanam ayatanavan bhavati yo mushyatapata ayatanam veda ayatanavan bhavati apo va amushyatapata ayatanam. It was correct intonation was apo va amushyatapata ayatanam. And what we did, the blunder was, we said apo vai amushyata, apo vai, va became vai, which is wrong. And Swami was just passing in his wheelchair, turned towards and gave us turning look as if firing a AK-47 to us and said, "What are you doing, boys? This is not the right way." Turned back and straight away went inside. And that was one lesson I learned with Bhagavan. If you are chanting or doing anything, Swami means 100%. Nothing less. It could be more, that's not an issue. But it can't be 99.99999. No. Sorry, it has to be 100% plus. That day I took a vow inside me and all of us, come what may, we will chant to the best. We will chant less. We'll go for the quality rather than quantity. And then we started and had a good team of Vedam in Delhi. I still remember each and every one, though I miss them every now and then. Whenever I see some activities going on, and especially Vedam comes and then means, oh, yeah, I'm missing it. Whether it is Ekadasha Rudram or
any activity in that direction. Now this was something in Delhi. There are a few more instances. I will keep it for some other time. Now let me come to what I experienced in Prashantilayam after joining PR office. There is two incidences which I have written it specifically to share with you, so I don't miss it. This was a time when COVID was at peak and all international flights were cancelled. And there were no communication at all, whether through land or through air. So there were some special permissions granted by the Ministry of External Affairs, Government of India, for foreigners especially, to go back to the respective countries through special passages. And since PRO office at Prashanti, we were the model office for coordinating with the state government and the central government and all the government agencies and with the devotees. We were a middle link with them for proper communication and other things, for free passage of them. So one evening, a group of 10 to 12 Russian devotees, majority of them were ladies and few, I think 6 to 7 were ladies and 4 or 5 were gents. And they had given us a letter from External Affairs that so and so people with holding so and passport are given permission to go back to their respective country, Russia, through Bangalore or through Goa. And there were 12 persons, and we had, when we took the list out, we took out the printout, there were name of 9 persons only. And we said, sir, to the gents, there were 1 gents and 2 ladies' names were not there. We said, sir, all of you could go except you 3 people. Why? Because the permission is for 9 people only. And that person was just crying there with that ladies. No, sir, we have also permission is there. Because, sir, no, sir, written from the government of India, we have just used 9 things. I don't know what happened. He went to his room and less than 10 minutes, mark my words, less than 10 minutes, he came back to us, showed the same letter, because every government data or every communication, you might be knowing there will be some code number of it, GOVI, MEA, so on and so forth and so on. The number was 12A, suppose a letter on 14 February, that was a letter. He came with the same letter, not a single amended on the letter number, just adding these 3 names. Even we were surprised ki what was this, and they were going through. Who else? Any government letter, if a supplementary letter comes, it has to be some amendment in the letter number. A or B or something number has changed, but nothing was changed. Only these 3 names were included into it. So I think, let me conclude here, because this was experience which showed, yes, Swami is with us all the times. So I conclude my session. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishaah go brahmanebhyah shubhamastu nityam samasta lokah sukhino bhavantu samasta lokah sukhino bhavantu samasta lokah sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.